I would like to ask the question to our captains, and all the team members, as we are the tigers, I would say. So I want everyone's energy. You all should roar like a tiger when we are getting the answer as well. Okay. So पहले कौन आंसर करेगा? सरफराज, आपसे ही शुरुआत करते हैं. I was holding myself because I wanted to ask so many things to him. तो सबसे पहले ये बताइए. हेलो. Yes. आप कैप्टन हैं आकाश टाइगर के. जब आपको पता लगा और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होंगी, तो वो फर्स्ट थॉट जो था आपके मन में वो क्या था? कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे. और लास्ट ईयर भी मैं टीम के साथ थोड़े टाइम के लिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं खेल पाया क्योंकि मुझे इंडिया के लिए जाना था. और इस साल जब मुझे पता चला कि मैं लीड करने वाला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हुआ. बिल्कुल. हमारे कैप्टन के लिए जोर से ताली बजाओ ना पीछे वाले. हाँ बिल्कुल. कैप्टन से बोल रहा है तालियां बजनी चाहिए. तालियां बिल्कुल बजनी चाहिए. एंड हुमैरा, we all know women's cricket team. Just now we have won the World Cup as well, and how important it is, not just for the women empowerment, but for each and everything that we see in the world right now. So, according to you, how important are leagues like this for a women cricket in India? हेलो. हाँ जी. आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द सपोर्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी. एंड आई थिंक आकाश टाइगर्स हैव डन इट वंडरफुली द वे वी गॉट सपोर्ट फॉर द लास्ट 2-3 weeks. वीव प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस एंड आई फील जो सपोर्ट हमें यहाँ से मिल रहा है, इट्स गोइंग टू हेल्प अस शोकेस आवर टैलेंट, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प अस इंडिविजुअली एज वेल. Definitely, it is going to help each and everyone. Girls over there, everyone actually. And yes, here's the question to our sponsors. I would like to ask, according यहाँ से तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, because when you were preparing the team, तो अपने जहन में भी बहुत सारे ideas होते हैं. So what was the thing that came in your mind while you were preparing, and what is that thing that you really loved about Akash Tigers? First of all, I think the owners, I think we are all on the same page. I think the most important job was on auction table. I think that's the day is very critical to pick your barrister. The boys are sitting, they deserve to be in this team. They are done well in all domestic Mumbai club level tournament. Also now we got Shams have also done well for us, the Akash Tigers in the last year. And now Sarfraz is like current IPL player, the test player. I think that gives a lot of value. And what I like about now this team is like everyone is eager to go there and show their mettle because they all believe in themselves. It's, I think, as a mentor, I don't have much time because I believe in these boys. I think they know how to handle pressure. They know how to win the games. And if there is there, we are always there. But the support as the owners we got, I think that's very important because it's not easy to tell them like we want so many practice sessions, so many practice match. But they provide us all those things. And not only for men, I think for girls also, which I am observing for last 3 weeks, which is very, very important because we all say as a coaches, if you fail to prepare, then prepare to be a failure. I think that's the tick box from the owner's side. They have given us a free hand, and I think that's also allowed us to know each other. I think that's very important for the boys, which they are playing for different teams in a club. I think, but they're playing all Maidan cricket, but coming and practicing under light is very critical. I think that's the most important aspect. As a owner, they are taken care. Like we practice more in the lights because that's more important to do the good fielding sessions there. So let's see if we are done our job. Now it's up to the ball in our boys' court. Now go there and express things. And I'm sure like we are not putting them pressure, but it is also I look like this is the responsibility in such a way to go to the next level. Because if their dream is to play for Mumbai or India, I think the pressure will be there, and this is the step they will know how to handle the pressure, how to win the matches. I think next step will be that only. If you are a match winner, then only you can go to the next level. And I can see that these boys can do well and go to the next level. Definitely, can we have a round of applause? मेरे लिए तो ये है कि अभी मैं चेन्नई की टीम से आ रहा हूँ तो
माई भाई के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है उनके पास जाना और सीखना, तो मैं बहुत लकी था, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। तो मैं जितना भी वो सिंपल रखने को ही देखूँगा सारी चीज़ें, जो भी मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। उन्होंने बोला कि एक अच्छा कैप्टन चीज़ों को सिंपल रखता है, और जब आप सिंपल रखते हो चीज़ तो सब चीज़ बेटर होती रहती है। Yeah, for me, I think it's, like my journey started from Mumbai under 15 cricketer. I think that's what all about, playing for Mumbai Ranji, then playing for country, and then Mumbai coach. And now I think I'm learning like how to, mentoring is also like allowing boys and coaches to do their work and just monitoring them, and if necessary, you go involved in that. But it is more like a supervision, but it is what I believe, like if I am a coach, how I wanted my mentor. So I think that's what I'm learning in this role now, and thank for the franchisee giving me this opportunity, because as I said, in my life I wore many hats, and I think this is one of these, and I just wanted to enjoy that also. Thank you so much. फर्स्ट टाइम होगा कि वुमेन्स की टीम खेलेगी मुंबई T20 लीग में, तो कैसा लग रहा है जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, और आप लोगों की टीम की प्रिपरेशंस कैसी थी? ये फर्स्ट सीजन होगा वुमेन्स के लिए, सो आप लोगों की टीम की प्रिपरेशन कैसी थी, और ये अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, सो आपके टीम मेंबर्स ने आपके साथ क्या थॉट्स शेयर किए हैं? आई थिंक डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे विमेन क्रिकेटर्स के लिए मुंबई में। बीसीसीआई के लिए जब भी टीम निकलती है 15 को ही मौका मिलता है वो लाइट्स के अंडर खेलना या लाइव ग्राउंड्स पे खेलना, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर एवरी ग्रास रूट लेवल क्रिकेटर टू कम आउट देयर एंड एक्सपीरियंस द सेम प्रेशर एंड एक्सेल इन दैट. And preparation wise, I would say we've had a good couple of weeks. We've had good practice matches, and I feel all are looking good. I just want everybody to go out there and enjoy their cricket, and that's something that I'm focusing on, because I feel in pressure situations, the more you enjoy the pressure, the more you come out at the top. So that's what we've been preparing for the last 2 weeks. थैंक यू. Because it's very, very important. We all are preparing really well. All the teams, we are ready, we'll roar like a tiger. So मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर फराज एंड हुमायरा कि आपका मैसेज क्या है दूसरी टीम के लिए, क्योंकि आप उतर रहे हैं मैदान में, पूरी टीम उतर रही है मैदान में, तो स्टार्टिंग में जब हमारी ये जो लीग है स्टार्ट होने से पहले क्या मैसेज है उनके लिए? दोनों मिलके. सामने अगेंस्ट टीम के लिए? यस टीम के लिए जो सुनेंगे अभी. नहीं, ऐसा कुछ उनके लिए मैसेज नहीं है. आई थिंक मैसेज मैं अपने टीम को ही देना चाहूँगा कि रोर करने के लिए रेडी रहो. ठीक है, अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि हमारे पास सबसे डेंजरस मेंटोर है. ओह, वेरी नाइस. इतने प्यार से जो होता है ना, धमकी दे दी गई है कि नहीं तो ये हो जाएगा. दैट्स रियली नाइस, दैट्स अमेजिंग. मतलब आपको कैप्टन कूल बोलना बिल्कुल सही रहेगा, राइट? कितने कूल तरीके से इन्होंने बता दिया. जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर कैप्टन, लेडीज एंड जेंटलमैन. It's your turn, Humaira. I think likewise what Sarfraz said, my focus is always on my team. I like to focus on the strengths of our team rather than focusing on the weakness of the others, because if we are playing a certain brand of cricket, the results will fall in our place. So that's something that I like to keep. I like to tell the team to be grounded and just focus and be in the present. That's it. Wow, wonderful roar. So, ladies and gentlemen, it's time now for the jersey launch, and what can be a better way than this? The way he's walking. A fierce, smart, and the attitude. Hello, sir. Oh, just, come on, look at him, yes! Starting में और बोले शोले. Wow. Are you liking the jersey or not? Can you all clap together louder? I want to hear. Yes. Raghuba is here. This is our jersey. Let's. ही कितने हो,
खेल में राज उसका है जो आकाश से उतरे और इस जंगल पे छा जाए। Let's do it together. 3. Yes. Come on, you run. Louder and clear, everyone. देखो देवर देखो जुनून इस पे उतरे तो देवा दे खून सिर्फ हमारा है ये भौकाल हर एक शॉट पे है बवाल रास्ता छोड़ो किंग आए हैं जिनकी भूखी ये संग लाए हैं डर का मीटर हाई कर दो सबको जरा साइड कर दो गूंजेगा बस एक ही नाम आकाश टाइगर्स टाइगर्स आकाश टाइगर्स 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 ये है आकाश टाइगर्स मैदान के आकाश टाइगर्स आकाश टाइगर्स आकाश टाइगर्स। बैट घुमाए तो सीधा छक्का अपना हर एक दाव है And we also have the fan jersey as well. And we are giving this jersey to all our press members as well. So please wear it and support Akash Tigers. Can we all clap once again for the fan jersey as well? करेंगे सबका शिकार मारते नहीं हम कभी भी हार We are the Tigers आकाश टाइगर्स We are the Tigers आकाश टाइगर्स। The girls team as well. The entire team. सरफराज इकडे इकडे Okay, media, you want to ask any question? You can please come ahead. Those who want to